स्पीक इंग्लिश अभी में आपका स्वागत है। कवर पेज से आपको समझ में आ रहा है कि वी गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल नेम्स इन इंग्लिश। कौन सा एनिमल है ये? काउ, दिस वन, कैट, here we have lion, dog and a bird. Animal names in English. अगर आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, it will be good practice. Animals around us and their habitats. तो हम उनके वास के बारे में भी बात करेंगे। वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है? So the goal of the lesson is that students will learn animal names, what animals eat, and they will match the animal with its habitat correctly. And all this we will do with simple English sentences. Okay, so let's get started. देखो और बोलो। आप यहाँ देख रहे हैं there are 4 habitats. 1, a jungle habitat or forest. 2, an aquatic or water habitat. 3, snow ice or polar habitat. And the 4th is a desert रेगिस्तान habitat. ठीक है? So what animals do you see? I see a leopard in a jungle. Okay, I see a cheetah in a jungle. Clear? What do you see here? I see a turtle and I see fish also in an aquatic or water habitat. Next, I see a penguin. I see a penguin in a ice and snow habitat. Okay. And what else do you see? You see a camel in a desert or Registan habitat. There are many kinds of habitat, but हमने यहाँ पे 4 को choose किया है. ठीक है? Forest, aquatic, ice, snow and deserts. जानवर जो हैं 2 किस्म के हैं, पालतू होंगे या जंगली, राइट? सो इन इंग्लिश व्हाट इज पालतू? डोमेस्टिकेटेड. अगर ऐसा बड़ा वर्ड आता है यू कैन ब्रेक इट अप. डोमेस्टिकेटेड. एंड जंगली को क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. सो व्हाट मेक्स अप डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स? पालतू जानवर. पालतू जानवर they live in our homes and in farms. They depend on us for food, for shelter, and we care for them, right? They have adapted to living with humans. For example, cats, dogs, cows, horses, etc. ठीक है? ये हमारे साथ रहते हैं और हम इनकी देखभाल करते हैं. फिर आते हैं जंगली जानवर या wild animals. These animals live independently in nature, away from humans. They provide for their own needs. ठीक है? अपना खाना खुद ढूंढते हैं and have strong survival instincts. For example, lions, bears, elephants, etc. Okay. So here is a picture of wild animals. Okay, and here is a picture of domesticated animals. Clear हो गया? पालतू जानवर यानी domesticated animals, जंगली जानवर यानी wild animals. Let's take a look at some domesticated animals. अब जब हम sentences बनाएंगे for a question like यह कौन सा जानवर है? What will you say? What animal is this? What animal is this? और आपका आंसर होगा this is a, और आप जानवर का नाम लेंगे. This is a dog. Right? ये क्या है? This is a cat. And this is a cow. Clear? So I've given you examples of how to say this is a. अब आप और भी describe कर सकते हैं and you can use describing words like this is a dog, it barks at strangers. It is brown. तो मैंने इसको थोड़ा describe भी कर दिया. चलिए cat को देखते हैं. This is a cat. It drinks milk.
इट इज स्मॉल और इट इज अ स्मॉल एनिमल। ठीक है, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन कैट की भी दे दी। अब चलते हैं काउ पे। दिस इज अ काउ, इट ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स। गाय पत्तेदार सब्जी खाती है। ठीक है, इट ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स। ये हमें दूध देती है। इट गिव्स अस मिल्क, इट गिव्स अस मिल्क। ओके, सो हियर यू हैव थ्री सेंटेंसेस अबाउट अ काउ। तो इसी प्रकार आप भी सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। चलिए तीन एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑफ जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स, बाघ एक जंगली जानवर है। द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। ओके, यह मांसाहारी है। इट इज carnivorous, carnivorous, it is carnivorous. Okay, मांसाहारी, carnivorous। बाघ जंगल में रहते हैं। Tigers live in the jungle. So three simple sentences about the tiger. The tiger is a wild animal. It is carnivorous. Tigers live in the jungle. चलिए एक और उदाहरण देखते हैं भालू का। ओके, भालू एक बड़ा जानवर है जिसके शरीर पे घने बाल हैं। ओके, द बेयर, याद रखिए बेयर प्रोनाउंसिएशन, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, द बेयर, नॉट बियर। द बेयर इज अ बिग एनिमल विथ थिक फर। ओके, द बेयर इज अ बिग एनिमल विथ थिक फर। भालू एक सर्वाहारी जानवर है। द बेयर इज एन omnivorous animal, omnivorous animal. Okay, and आप चिड़ियाघर में भालू देख सकते हैं। You can see bears in the zoo. Three sentences about the bear. Easy? Good. Now the next example is an elephant. Okay, हाथी सूंड वाले बड़े जानवर होते हैं। In English, elephants are large animals with trunks. Elephants are large animals with trunks. हाथी एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Elephants are found in Asia and Africa. In Asia and Africa. Elephants are found in Asia and Africa. हाथी शाकाहारी होते हैं। Elephants are herbivorous. Herbivorous. तो यहां हमने देखा तीन बिग वर्ड्स, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड हर्बिवोरस। इनके मतलब क्या है? चलिए आगे देख के समझते हैं। ओके, व्हाट डू एनिमल्स ईट? जानवर क्या खाते हैं? व्हाट डू एनिमल्स ईट? Some animals are herbivores. आगे आपका herbivores, like giraffes and zebras. Giraffe and zebras. That is, they eat plants, fruits and seeds. क्या खाते हैं? Plants, fruits and seeds. Here, giraffe, see, is eating patta, and zebra, grass. So they are called herbivores, herb plants. ठीक है? Some animals are carnivorous. Carnivorous. They eat meat, like tigers and wolves. That is, they eat meat and flesh of other animals. Some animals are omnivorous, like turtles and pigs. That is, they eat both animal and plant matter. तो आपने देख लिया herbivorous, carnivorous और omnivorous का क्या मतलब है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Here are some animal names both in Hindi and English. ठीक है, थोड़ा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आप यहाँ बार बार आ सकते हैं। सुअर क्या है? पिग। कुत्ता डॉग, डॉग। बिल्ली कैट, कैट। घोड़ा हॉर्स, हॉर्स। भेड़ sheep, sheep। कछुआ tortoise, tortoise। सांप snake, snake। Then we have murgi, hen, hen। मछली fish, बतख duck, duck।
Khargosh, rabbit, rabbit. घोंघा, snail, snail. Mendak, frog, frog. And now we have hedgehog. Hedgehog में मैंने हिंदी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि in Hindi also it is hedgehog. ठीक है, जहाँ जहाँ it's the same word हमने एक ही बार लिखा है hedgehog. कोआला, कोआला. बंदर क्या है? monkey, monkey. whale, whale. भालू, bear. याद रखिए it's not bear, bear. Penguin, penguin. Dolphin, dolphin. Kangaroo, kangaroo. केकड़ा क्या है? Crab, crab. चिड़िया, bird, bird. Octopus, octopus. मधुमक्खी, bee, bee. Seal, seal. उल्लू, owl. And bison, bison. तो ये सारे नाम हैं सम कॉमन एनिमल्स का. आप यहाँ पर आके बार बार देख सकते हैं इफ यू फॉरगेट. अब हम आते हैं मैच द एनिमल विद इट्स फूड. ठीक है, आपने देख लिया क्या क्या फूड खाते हैं. सो नाउ वी कैन इट्स टाइम टू मैच. डॉल्फिन्स क्या खाते हैं? फिश, फिश. गोरिल्ला, फ्रूट्स, फ्रूट्स. काउस, ग्रास, ग्रास. टाइगर्स, मीट. आप मेरे लिए रुकिए नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं. पेंगुइन्स, फिश. बफलोस, ग्रास. Camels, again, grass. Leopards, meat. And seals. Seals क्या खाते हैं? Fish. Okay. So we match the food. Now we know which animals are carnivorous, which animals are herbivorous, and which animals are omnivorous. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. And we'll do some more matching. Help each animal to find its food. Draw a line. So बहुत बहुत फूड खाते होंगे बट वी आइडेंटिफाइंग वन. ठीक है, कैट क्या होगा? मिल्क, कैट मिल्क. व्हेल, फिश. काउ, काउ काउ काउ, ग्रास. जिराफ, लीफ, लीफ लीफ लीफ. लायन, लायन, लायन विल गो टू मीट. और हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट विल गो टू fruits, fruits. Okay. We have chimpanzee or monkeys. They also go to banana. Clear? तो हमने देखा it's easy to identify the animal with the food they eat. चलिए एक और मैचिंग करते हैं. क्विज, हैबिटेट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. आप आगे बढ़ सकते हैं. You don't have to go with me. मैं थोड़े धीरे चलूंगी. The elephant lives where? Where? Jungle. Crocodiles in a water body. Cows in the farm or goshala. Monkeys, forest. Whale, water body. Fish, water body. Lion, forest. Polar bear, ice or snow. The cat in a home. The duck in a water body. Horse, 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 horse on a farm or stable. Dogs in people's homes. Camels in the desert. And a penguin will live where? In a snow or ice. In this video, we reviewed the names of different animals in English and made simple sentences. Did you find learning the the names of animal habitats easier in English? Yes? Please make your own sentences and practice because we have to speak English, Abhi. Can you please subscribe, comment, and share with friends and family? In the comment section, name your favorite animal. See you next Friday with a new video. Okay?